the John. I met at least in the two occasions. One occasion in the MIT, and the second occasion was the Aero India show. Aero India. This is the third occasion, yes. It's the third occasion, and within these two meetings, I was very a great fan of yours. First of all, Thank you, sir. such a important event you are holding, and actually it was the earlier responsibility of the governments to hold these kind of a seminars or the webinars. However, the private people are also coming into and venturing into this. So this changed India, I would say. You know that before 2014, the era was before and after now. So the before and after there is a change, and I am the witness of that change because I landed in Delhi in the 2014 only. Before that, I was in Bombay, one of the DRDO lab, and I landed in the DRDO headquarters, which is the Defense R&D headquarters. And all of a sudden, then the government also taken the shape and taken over the charge. And then in the 2014, the government has taken a new initiative by announcing in the budget itself. And you won't believe that DRDO is a very important and premier organization of the country, which is doing a lot of development in the defense technology, including the missiles, fighter aircrafts, the tanks and other things. But all we are giving the grants or the money to the academic institutions only. Grant means something we are giving for developing to the end goal on a milestone basis, but it was given to the industry, given to the academic institution. There was no provision that the grants can be given to the industry or the private players also. This was the vision and thought provoking at that moment of time. Can we have the run of the slide like Yes, this only? yes. Yogesh, next slide. Just make it automated to run. So in the year 2014, they have announced that we are starting a technology development fund. Then 2015, the scheme landed to us, and finally 2016, when Honorable Parikar Saab was there, the defense minister, the very visionary and lead man, he has approved the scheme, which is called Technology Development Fund. With the institutionalization of this particular scheme, we have institutionalized a new mechanism, a new era, which is actually giving grants to the industries very first time in the country under defense technology development. And luckily, I would be very honored to be part of this institutionalization of this particular scheme. I am one of the founder member of this scheme in DRDO headquarters. And you won't believe the whole government is being operated under the rule which is called General Financial Rules. And this para 233 is the funding of sponsored projects or the scheme. It was not mentioned private players. But the amendment done and now it has been institutionalized that private players or the private sector will also get the grants as a money to develop the technology. However, in the defense, there are the two schemes. One is the TDF, which is the 2 year older than the IDEX, and then 18, the IDEX was institutionalized. Both schemes, in terms of the operation, is entirely different. We are focusing on the technologies, which may go into all systems, subsystems. However, IDEX is probably focusing on the innovation and the product innovation and the way where we can do the kind of a development, how innovative you can make to solve problems. So that is the way the two schemes are working. They are mostly in the innovation to cultivate the startups and all. However, we are having a bigger funding, and our funding pattern is 90% from our side, 10% from the startup or the industry side. However, IDEX is working in the 50-50 partnership kind of a dealing. 50% you have to put and 50% the government will provide you. Till date, just run the slide. Till date, this is the total journey. If you see, starting from 2014 to 2024, now we have almost 10 years. We took 14 announcement, 16 approval, then 2 years we took for making the process and procedures. How we can fund to private industry, because this was the challenge. Very first time. What should be the process? What should be the format? Because we are dealing very first time with the industry. We were dealing with the industry like a vendor.
We are doing the procurement, but we never dealt the industry like a player who will be the partnering with us for the design and development of a critical defense technology, and where the DRDO is funding them, mentoring them for the development of critical technology. And then ultimately 18 we have awarded the projects. Till 23 we have sanctioned around 70 projects, and then probably in 24 we have started the various kind of amendment, because till date we have a lot of learning about this scheme, and presently we have given 80 projects worth 350 crore plus, around 30 startups, remaining are the MSMEs, and even 6 large industries also. Seeing the progress and the importance of this particular scheme, the Honorable Raksha Mantri has also enhanced the per project cost from 10 crore to 50 crore. So now per project cost we are giving 50 crores also, we are launching the projects. This year we got roughly around 500 CR for the deep tech and critical technology projects also. Government is saying you please nurture, you please support the startups or MSMEs, we are there with you. You just try to mentor them and develop them as you can. Shall we have the continuous run of the slides one by one? So in this way, this TDF is working. So how it is working? We have a dedicated website. The project requirements we are taking from the MOD stakeholders, and these are the specific requirements, because we are focusing on technology. We are not doing the kind of innovation. We want that the project should be very specific to a particular technology which may be plugged into various kind of platforms. So in that way, we are framing our project proposal. Writing a project proposal means you are framing a right questions. Then only you can give a good answer. But answer also to be as per the question formats. If you are not, then marking will not be given to you in that way. So that is the reason. सर But उसका भी however- ट्रेनिंग होना चाहिए थोड़ा सा Eh? उसका भी ट्रेनिंग चाहिए होगा Yeah. हाउ टू राइट अ प्रपोजल टू गेट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रस्ट मी nobody knows it Nobody knows it. biggest problem Yeah. So that is why now we are making the amendment in our the protocols also, so that you will understand in a very nice way exactly what we are looking. Initially, when we have launched, we are writing some diplomatic questions, and then you are giving some diplomatic answers, but it is not leading to this. So then we are seeing your strengths, we are interacting with you like that. We are selecting you. So we have selected. I have seen the journey through this particular scheme and the government investment into the startup policy and all. The startups or a company starting from 2 rooms, having not more than 10 people, and they are worth 200 crore company now within this tenure. They have delivered various kind of a systems to the defense forces. I have seen the journey. The startups age hardly 40, 35, they are worth 50 crore companies. This is the vision of the government actually. They are providing all necessary arrangements, all necessary things to you, so that you can nurture yourself, and the government officials are for there to support you, to mentor you whatever the way. Very small journey I will just showcase you. Just shall we have the slides continuous? Next. Funding 50 crore, eligibility any Indian industry, 51% R&D collaboration allowed with any academic institutions. Process is there that you need to follow, but it is not a procurement process. It is a process where we are asking you to submit a proposal against my requirement, not as a suo moto proposals. I will give you a requirement, I will give you a technology, what need to be done. Next. And then finally, at the end, when project will be sanctioned to you, 90% fund will give you, 10% you have to put, maximum 5 milestone, each milestone 20% payment will be given to you. this was the point I was mentioning it's 90% now earlier it was 50% it is now 90% No, 50, TDF was always 90, okay IDEX was 50%. all right okay. Yeah. So, When you say you will decide what the problem statement yeah. is it only DRDO or? No, it's all stakeholders. This may be the paramilitary forces, this may be the all tri-services, Coast Guard, and even for the DRDO bigger platforms what we are looking for. It may be the import substitution, it may be the
existing technology improvement, or the kind of a deep tech technology. So those kind of a proposals generally we will define. But however, if any of the good industry are giving a good proposals also, that also we are honoring. And there are the various other channels through which we are inviting those kind of innovative proposals. Next. Is this time bound, like you announce at some point of time? Yeah, we announce. We announce. Now we are going to make it the quarterly announcement of the proposals. But as and when it is coming, we are launching onto the website. Next. See the journey, if you see, starting from 18 to 24. See this scheme, forego we cannot say. Why? But failures are Because accepted. 97% is the failure rate of any new project. We accept the failure. We have 10 projects which go on to fail, and we have done almost reimbursement of roughly, I would say, more than 50%. So that's where I'm coming to, reimbursement. Now, even to get that money to do that first part of the project, I have two startups. If you even ask them, the way they're struggling, now they have to face a lot of emotional issues from family, friends, कि तू कर क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए तू startup कर रहा है. So all that, now they have to manage funds. Now how do we support them? सबसे पहले, अगर आपके पास इतना ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं है, आप इमीडिएटली वेंचर मत होइए. आप पहले लर्न करने की कोशिश करिए. गवर्नमेंट का विज़न है, अटल इनोवेशन मिशन के तहत वो इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ में. दे हैव ऑल्सो अलाउड इन दी प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो, एंड नाउ दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो ओपन देयर द इंक्यूबेशन सेंटर्स. अब जाइए वहाँ जाके पहले सीखने की कोशिश कीजिए प्रपोजल्स कैसे लिखते हैं. हर व्यक्ति को अभी ये जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि मुझे अपना कंपनी बनाना है, मुझे एकदम से जो है जॉन बनना है, ऐसा नहीं सोचना है. सबसे पहले जॉन के पास जाइए, सीखिए, समझिए और अपने आप को ट्रेंड करिए. आज अगर एक स्टार्टअप से मैं सिर्फ इतना पूछ लूँ ना कि स्टार्टअप इंडिया पे 45 स्कीम पड़ी हुई है, क्या उन्होंने वहाँ जाके उन स्कीम्स को देखने की कोशिश की है? उनका आंसर होगा नहीं सर, मुझे पता नहीं है. मेरे पास डेली 10 स्टार्टअप्स आते हैं मिलने के लिए. एक ज़माना वो था जब हम गेट से किसी को मना कर देते थे. आज ज़माना वो है कि हम मना नहीं करते हैं, सबको पहले बुलाते हैं, बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और फिर उनको बताते हैं बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है. वो कहते हैं मेरा स्टार्टअप है, मेरा ये विज़न है, मैं ये करना चाहता हूँ. तो मैं उनको समझाता हूँ कि आपको पता कितना है, बट उनको पता नहीं होता है. बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ आपको एनलाइटन करिए, एजुकेट करिए. आप वेब पोर्टल पे देखिए, आप जाके फिल्टरिंग मैकेनिज्म जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. Please make a note, guys. This is a very एरिया को important point. फोकस करिए. आप किस एरिया में जाना चाहते हैं? डिफेंस में जाना चाहते हैं तो डिफेंस में आपको पता होना चाहिए. अभी किसी को मैं ये भी पूछूं कि डिफेंस में कितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, किसकी प्रॉब्लम्स क्या है, लोगों को नहीं पता होता. अब एनलाइटन करना Very होगा. true, sir. दूसरी MS1 में हम लोग क्या करते हैं कि 20% का पैसा है और सिर्फ रिटर्न डॉक्यूमेंट मांगते हैं. तो इसका मतलब अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपके पास तो लगभग 1.8 करोड़ सिर्फ रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखने के लिए आपको मिलता है. I think that's good to start. आपको वहां से किक स्टार्ट मिलता है एंड देन यू कैन कंटिन्यू द योर प्रोसेस. I can see the transformation, guys. Trust me. 5 years back, I was not happy. Now I'm very happy. Sir. Sir, 5 years back, I couldn't trace you also. सर को भी कितना परेशान करता हूँ. सर, थोड़ा पैसा यहाँ पे डाल दो. Sir, please continue, sir. So this is the year-wise expenditure. This year we have sanctioned roughly around 45 crore to the various startups and MSMEs. Next. This is the families of the industries that DRDO is making under the TDF scheme. Continuously this is evolving, and we want John also to be there. Sir, अब आ रहा हूँ. Please try to. I'm coming up with a bigger project proposal. Yeah. Next. See, these are the few successful technology. When I am saying technology, I think you should applaud that, all those companies that have been funded by TDF. It's a big transformation for our country, trust me. I need to really mention 350 this. crore I have given. So like that everybody is asking me 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में कब आ रहा है. एक कंपनी, एक प्रोजेक्ट अगर TDF में मिलता है जो कि सरकार की मदद से मिला है या सरकार के द्वारा स्थापित ऐसी स्कीम्स के थ्रू मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग वो 20 से 40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं. जो हमने 350 करोड़ दिया है, लगभग 30% पैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जा रहा है उन कंपनीज के पास जो नए स्टार्टअप्स उसको यूज करते हैं. इसके अलावा 5 से 10 जो DRDO साइंटिस्ट हैं वो मेंटर कर रहे हैं उस स्टार्टअप को, उन टेक्नोलॉजीज को स्थापित करने के लिए. इफ यू सी हियर
very first time, all these niche technologies are there. They were only the import available for them, but now we have in the country. The very first project 125 TPH पंप है ये, जो कि नेवल शिप के ऊपर इंस्टॉल्ड है और ये पूरा कंपोजिट में बना हुआ है सिर्फ मोटर को छोड़ के. सेकेंड ऑन बोर्ड कंप्यूटर है सुखोई 30 का. AVM sir can appreciate this. This is the on-board computer ARINC 818 and it is the having a analog to digital converter. सिर्फ 4 कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जो इसको बनाते हैं, चौथे हम हैं जो TDF से बने हैं. Autonomous UAV है for search and report operation in GPS denial environment. सिलकियारा लेक में इसका इस्तेमाल हुआ था. CAPF ने अभी ऑर्डर इनिशिएट किया है, TDF में डेवलप हुआ है. ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स, जैसे मॉर्निंग में होता कि BLDC मोटर्स कहाँ बन रही है, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स सारे स्टार्टअप बना रहे हैं. If you see the fuel system temperature transistor for aircraft application, Su-30 के लिए a startup who has started led by the lady got the order of 8 crore rupees from the Sukhoi division for this particular item. Composite में doors, very recently we have developed these doors and hatches for the naval ships and the submarines. INS Airabad पे installed और अभी ये fix हो गए हैं. Now Navy is using this. This technology, which is called the cryocooler for the Joule Thomson cryocooler, it will be used in the IR missile seeker. And you won't believe कि हमारे पास इसके लिए अभी से लाइन लगी है कुछ फॉरेन कंपनीज की कि ये क्रायोकूलर हम इंडिया का इस्तेमाल करेंगे. ऑलरेडी दे आर इन टॉक विद दोस. तो ये सब सक्सेसफुल है जो धीरे धीरे आ रही है. आगे नेक्स्ट, these are the few glimpses of the other technologies. Next, ARINC 818 हमने साउथ कोरिया को बेचा. जेटी कूलर के लिए हम ऑलरेडी फ्रांस और इसराइल के साथ टाई अप कर रहे हैं. इतनी सारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को सेल कर दी है या करने वाले हैं. ये सिर्फ एक किक स्टार्ट है. देखिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसका प्रोसेस, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, उसका फ्लो, फिर उसमें प्रोग्रेस, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस दिखाई देती है. इमीडिएटली नथिंग इज गोइंग टू गिव यू अ रिजल्ट. बट हमने एक पेड़ पौधा बीज डाला था, पौधा बना, अब धीरे धीरे वो हर्ब की शेप ले रहा है और धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है. लेकिन ये ऐसा पौधा है जो था ही नहीं. आज उसको सभी लोग पानी देने की कोशिश कर रहे हैं, खाद देने की कोशिश कर रहे हैं और वो पौधा बड़ा हो रहा है. और उसके थ्रू लोग नर्चर हो रहे हैं, उसके नीचे लोग बैठ रहे हैं, छाया ले रहे हैं, फल खा रहे हैं. तो हमको वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो चीज़ थी नहीं, एटलीस्ट वो है हमारे पास आज. Next. So these are the few glimpses. Just go through it, continuous, just click. ये देखिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, फ्यूचरिस्टिक हाई परफॉर्मेंस, जिसमें लोग मिलियंस ऑफ मिलियंस रुपीस जो है फॉरेन नेशनल्स डाल रहे हैं ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी फॉर द स्पेस सैटेलाइट्स के लिए. TDF ने 2 स्टार्टअप्स को फंड किया था. एक वेलेट्रिक्स है जो कि ISC में इंक्यूबेटेड है और एक मनस्तु एरोस्पेस है जो कि IIT बॉम्बे में इंक्यूबेटेड है. दोनों को दिया था. Nice. एक को हमने 9 करोड़ रुपए दिए, एक को हमने 7.2 करोड़ रुपए दिए. दोनों ने C-58 मिशन में अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और प्लेस किया और स्मॉल प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए सैटेलाइट को मूवमेंट के लिए स्पेस में वो सक्सेसफुली ट्राई हो गया है. तो ये हमने एक छोटे से एकदम स्मॉल अमाउंट से लोगों को स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली वी गॉट द रिजल्ट. Sir, one quick question. Is there any fund also for non-government project? Or is it only for government projects? Only government projects. Pure government projects. Okay. But when you give us a suo moto kind of a proposal or innovative proposal, ultimately it will be converted into a government proposal. If I like your project proposal, if you are giving from the non-government agency, and if you looks it is very promising, then probably I will convert it as a DRDO requirement. Right. So it will become a government project. What about space projects? It is DRDO project only. We have a space agency, a small deep tech technology for the space, Right. because we are using for the satellites. Right. Okay. Next. Just quick. Because we would want to now Quick, go quick. for the next one, sir. Quick. These are the technologies which we have developed, many more.
So you will just go through our website and you have a look. All innovative proposals can be given to this Dare to Dream innovation contest, the Pan India contest, which we are launching every year. It's a kind of a suo motu proposal acceptance. Right. Next. टिल डेट हमने 70 इंडिविजुअल्स और 47 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया था इस इनोवेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और लगभग 10 लोगों को हमने प्राइज देने के बाद कन्वर्ट किया टीडीएफ प्रोजेक्ट्स में. तो हम लोग यहाँ से इनोवेशन वाले लोगों को, स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर उनको हम टीडीएफ फंडिंग के थ्रू 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग देते हैं. तो वो स्टार्ट होता है एक इंडिविजुअल से जो कि अप्लाई कर रहा है अपने आइडिया को, फिर वो कन्वर्ट कर लेता है अगर अपने आप को स्टार्टअप में, तो वो टीडीएफ की 10 करोड़ की फंडिंग को लेके काम कर सकता है. इसका मतलब जो बच्चा एक एमटेक था, बीटेक था या पीएचडी कर रहा था, उसको आइडिया नहीं था कि मुझे 10 करोड़ की फंडिंग मिल जाएगी, बट आज एवेन्यूज हैं. बट आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा, दौड़ में मत भागिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और फोकस रहिए. नेक्स्ट. ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने डे टू ड्रीम के लोगों को अवार्ड किए. नेक्स्ट. हम लोग अभी डीप टेक प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं. इस साल हमें 500 करोड़ रुपए अलग फंक्शन में, उसके थ्रू हम डीप टेक प्रोजेक्ट बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे. नेक्स्ट. ये कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, ये मेरे प्रेजेंटेशन में है. प्रेजेंटेशन की कॉपी मैंने आपको दी हुई है. Yes sir, we will distribute. Also please take sir का number, ठीक है? You must take sir का number. तो ये वाले प्रोजेक्ट्स की जो लिस्ट है वो आपको बहुत जल्दी हमारे वेब पोर्टल पे भी हम लोग लोड करने वाले हैं, और स्लोली दीज प्रोजेक्ट्स आएंगे. अगले 6 महीने में हमें इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए ऑलरेडी अनुमति मिल चुकी है. नेक्स्ट. 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 सबसे बड़ी चीज ये कि आप बना तो लोगे तो खरीदेंगे कैसे. गवर्नमेंट ने इसके लिए भी प्रोविजन किए हैं. एमओडी में 2 एक्विजिशन प्रोसीजर्स हैं. वन इज कॉल्ड डीएपी, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, अदर इज कॉल्ड द डीपीएम, डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल, रेवेन्यू और कैपिटल. तो टीडीएफ के लिए ऑलरेडी अमेंडमेंट किया हुआ है, टीडीएफ के लिए भी और आईडेक्स के लिए भी, कि जो भी टेक्नोलॉजी कोई स्टार्टअप या कोई कंपनी डेवलप करती है तो उसको खरीदने के भी चांस है. बिल्कुल ये उसी तरीके की बात है कि इस रूम में कुछ खाना है जो कुछ लोग अपने डब्बा में लेके आए हैं, मतलब इंडियन खाना है, इंडिजिनस खाना है, और जॉन ने बाहर अरेंज किया है इंपोर्टेड खाना, जो नहीं देसी साउथ इंडियन खाना मैं बता रहा हूँ. जब तक मैं वो दरवाजा बंद नहीं करूंगा तब तक आप क्या करेंगे, निकलने के चांसेस हैं. तो गवर्नमेंट हर तरीके से देख रही है कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हो सकती है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट एम्बार्गो लेके आते हैं, जो कि पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट है, जिसके थ्रू हम लोग बैन लगाते हैं कि आप इंपोर्ट मत करिए, सिर्फ अपने स्टार्टअप और एमएसएमई से. We have benefited. Fixed wing military drones were banned 2 years back. That opened doors for procurement of fixed wing military drones in India, and we completely took advantage of it, and we became the only hand launched fixed wing startup at that time, and we actually got contracts. And that is the only reason the positive international list impact actually. Guys, you must make a note. Things are changing. Our country is actually developing and changing. मैं जब भी कोई स्कीम लॉन्च करूं मुझे देखना पड़ेगा उसके चारों तरफ और कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो उसको हिंडर कर रहा है. अगर मैं उनको एड्रेस नहीं करूंगा तो कुछ नहीं हो सकता. आपका अगर बॉटल नेक है तो आपको उस बॉटल नेक को क्लियर करना पड़ेगा. प्रोविजंस है टीडीएफ के लिए भी, आईडेक्स के लिए भी. हम खरीद सकते हैं, सर्विसेज सब खरीद सकती है. साथ में टीडीएफ और आईडेक्स से जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं हम इम्पोर्ट एम्बार्गो में डालते हैं, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि हेडेड बाय द सीडीएस. वो इम्पोर्ट एम्बार्गो लिस्ट तैयार करते हैं और हम उसमें डालते चले जाते हैं. हर साल की एक लिस्ट में कम से कम 5 से 10 आइटम फ्रॉम द टीडीएफ साइड वी आर गिविंग देम कि आप इम्पोर्ट एम्बार्गो डाल दीजिए, ये हमारा डेवलप हो जाएगा. जैसे अभी डोर्स एंड हैचेस कंपोजिट में इम्पोर्ट एम्बार्गो आ जाएगा. फ्यूल टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर इम्पोर्ट एम्बार्गो आ जाएगा. 818 एरिंग का जो कार्ड है उसके लिए इम्पोर्ट एम्बार्गो हमने डाल दिया है. तो जैसे ही डेवलप होता है हम इम्पोर्ट एम्बार्गो डाल देते हैं. So that means it will be benefit to the startup who has developed this. But at least एक thought process तो चाहिए. So everybody, whosoever in the MOD, everybody is thinking about what should be done next. What next? What next? Thank you very much. Sir, thank you so much.